हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस मु आपणकर प्रियव्रत सर वेलकम करूची आपणको एसएसबी टीजीटी 2024 एग्जाम पाई गोटे पॉलिटी क्लास को हाँ मु आपणको पॉलिटी पढ़ाइबी जहा जहा प्रॉब्लम अछि पॉलिटी रे ए क्लास रे सॉल्व होबो ठीक अछि मो स्टूडेंट्स मानक पई आपणको लाइफ रे जहा भी प्रॉब्लम अछि सेटा मु सॉल्व करिबिनी किंतु पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी रिलेटेड जहां भी प्रॉब्लम्स अछि मु सॉल्व करिबी सो आज के क्लास रे पॉलिटी रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर मु लेके आसीची जार ना होची फंडामेंटल राइट्स हला फंडामेंटल राइट्स एटा कोन पे स्टार्ट करूची नेम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स माने कोन What do you mean by fundamental rights? The basic rights, the fundamental law of the land. जोटा हम constitution रो सबुटो integral part. आ जोटा एते integral, एते important सेटो हम start केमिति बा करिबानी. Okay, let's start the fundamental rights. मो सहित जोड़ी की रुहंतु जहां लिखिबार अछि लिखि दियंतु लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चंस आपण मानक पई अछि stay connected. Okay, so fundamental rights ro किछरा basics first आपण मानक को कहूची first हला it has been taken from the bill of rights of USA जदि क्वेश्चन आसे कि फंडामेंटल राइट्स को कंट्री रो बोरो करा जाय छी हां इट इज फ्रॉम USA ओके गोटे मिनिट खाली पेन टा ऑन कर दे पिले जस्ट अ मिनिट होल्ड करो Okay, so it has been taken from the Bill of Rights of USA रो बोरो करा जाय छी फंडामेंटल राइट्स एंड शॉकिंग कथा होची आमे यूएसए रो आनी चंदी सतो किंतु यूएसए रे जत्ति की राइट्स प्रोवाइड करा जाउची ना ताटू बहुत अधिक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया रे अवेलेबल अछि ठीक अछि सो राइट्स फ्रॉम यूएसए सेकंड हला इट इज गिवन अंडर पार्ट 3 पार्ट्स माने जानचो तो पार्ट्स माने जानचो ना आसी घर को बुझिएको यस जो पार्ट्स अछि कॉन्स्टिट्यूशन रो ता पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स विषय प्रोविजंस अछि आ को आर्टिकल भीतर प्रोविजंस दिया जाय छी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 वीडियो पूरा देखो जदि गोटे भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड डाउट आसेला ना मते पर्सनली फोन करी कहबो हला सो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 भीतर फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड प्रोविजन अछि ओके सो व्हाट्स इन अ नेम मु सब बेले मो स्टूडेंट्स मानु कुहे व्हाई फंडामेंटल राइट हमें किछि भी ना दे दिथांते चक्रधर राइट दे दिथांते विद्यासागर राइट्स दे दिथांते प्रियव्रत राइट्स दे दिथांते व्हाई फंडामेंटल आर गोटे रीजन अछि बिले फंडामेंटल राइट्स कोन पई कोहा जाउची हला लेट मी टेल यू व्हाट्स इन अ नेम कतरा के कहितले शेक्सपियर ना रे कोन अछि बाबा ना रे बहुत किछि अछि अगर ये नहीं होता तो वही होता जो मंजूरे खुदा होता फंडामेंटल राइट बहुत दरकार काना फंडामेंटल रो ओडिया होची मौलिक अधिकार the basic rights which are necessary for a democratic functioning of the country बुचना नहीं आमो कंट्री रो प्रॉपर फंक्शनिंग पाई आमो कंट्री रे गोटे इक्वालिटी मेंटेन करिया पाई इंडिविजुअल्स मानको डिग्निटी को मेंटेन करिया पाई ए राइट्स गुडा दरकार सो सेटु आसीची फंडामेंटल राइट्स which are fundamental laws of the land फंडामेंटल लॉज ऑफ द लैंड बहुत एसेंशियल आ बिना हे ही परिबनी ये नथले तो किछ हबनी हो ओके सो व्हाई फंडामेंटल राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स को कोन पे रखिछु कोन लागुची कोन पे फंडामेंटल राइट्स रखियो पड़ला लेट अस सी व्हाई देखो फर्स्ट हला ब्रिटिश एक्सपीरियंस ए पेन ता जते थोर कटु जे टू ओके जस्ट अ मिनट के पेशेंस रखो हम ओके ब्रिटिश एक्सपीरियंस देखो पिले आमे आम कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स माने जहां भी प्रोविजन रखी छंती ए टू जेड तार सबुठ मूल कारण कोन जानचो आमे जो रेट रे नाम नैथिले ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे आमे जहां जहां सब एक्सपीरियंस करिथिले से जेमते आउत रिपीट हबनी आमे आगुरो भाई सेफ्टी नै गेलु ओगल ना ना आउ एमितिया नाम आउ नबुनी आमे से तो रियलाइज कले जे आम लोक मानको राइट्स दिया जाउनी आम लोक मानकर बेसिक फ्रीडम्स संग अवेलेबल करा जाउनी सो सेही सब जिंस को मुंडे रखि के हमें भाबिलु कि ना सम सेट ऑफ राइट्स आर नेसेसरी एटा नथिले गोटे कंट्री को भलो भाबरे चलै हबो नाही लोक मानक भितर इक्वालिटी डिग्निटी मेंटेन करी हबो नाही सो फर्स्ट जिंस हला ब्रिटिश एक्सपीरियंस ब्रिटिश माने हमको बहुत किछ सिखि जंती खराब रे हो मंद रे हो बहुत किछ सिखि जंती नेक्स्ट हला टू प्रमोट वेलबीइंग ऑफ पीपल एटा किसी बुझेबार अछि लोक मानक वेलबीइंग ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान द भारत लोक मानक छडा कहा विषय भाबे नाही हला लोक मानकर वेलबीइंग केमिति हे परिबो फंडामेंटल राइट्स ता ऊपर एम करे नेक्स्ट हला गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन कटि जाई साइड के गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन हमें गवर्नमेंट क्रिएट करियो चाहू छु बाय द लॉ नॉट बाय द मेन माने कोन लॉ को नै कि रूल्स को नै कि गवर्नमेंट तयारी हबो लोक मानक को नै कि न बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट हला ओके
बिफोर कमिंग टू द फंडामेंटल राइट्स माने जो सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ता विषय तो कहिबी बट ता पूर्व गोटे जिनस बहुत टाइम में मिस कर दो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हला फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गोटे एमिति सेगमेंट जो तो बहुत प्रकार रे एमसीक्यू आसी परिबो लेट अस सी ए फीचर्स गोडा कोन फर्स्ट हला राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स ओके गोटे मिनट सपोज मु कहली आम फंडामेंटल राइट्स खाली सिटीजंस मानक पय अवेलेबल अछि सेटा भूल हे जिवो ओके केवल सिटीजंस मानक पय अवेलेबल न थाए इट इज आल्सो अवेलेबल फॉर फॉरेनर्स एटा सत्य कथा कि सबुतक राइट्स फॉरेनर्स मानक पय नाही किछिटा राइट्स फॉरेनर्स मानक पय अछि आ सब सिटीजंस मानक पय मान अछि माने मु कहि परिबी सम राइट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजंस ओनली सम राइट्स आर अवेलेबल फॉर both citizens and foreigners I hope a point clear हला जदि क्लियर हेनी कमेंट दियो डिस्कस करिवा हला both citizens and foreigners को पई राइट अछि नेक्स्टली एब्सोल्यूट एंड इटी गोटे एरर इच गोटे मिनट एटा एक्चुअली भूल अछि पिले एटा एब्सोल्यूट एंड नॉट क्वालिफाइड नुह गोटे मिनट क्वालिफाइड एंड नॉट एब्सोल्यूट हबा एटा भूल लिखा आइछि these are qualified हला these rights are qualified in nature and not absolute आ माने कोन देखो हम फंडामेंटल राइट्स हमको बहुत प्रकार प्रिविलेज दोछि बहुत प्रकार राइट दोछि सत बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर माने कोन कहलो तुम सपोज मोटे फ्रीडम देली फ्रीडम ऑफ स्पीच देली हला फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देली ता माने नु जे तुम मनो इच्छा राइट को एक्सप्लोर करिवो नो 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 किछटा टाइम रे किछटा सिचुएशन रे हमर पार्लियामेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तापर पकेई परिवो एंड हम सेठी किछि भी करि परिबो केना हम कॉन्स्टिट्यूशन एटा कहउची कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर क्वालिफाइड इन नेचर क्वालिफाइड माने किछटा रेस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट पकेई परिबो एटा यदि क्वेश्चन असला आराम से करि परिबो ना नहीं फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड एंड नॉट एब्सोल्यूट आर माने कोना माने ये जे Parliament can put reasonable restrictions on our fundamental rights as per the situation. Let us move on to the next point. Next point hela not only against the state but also private individuals. आ माने होची देखो fundamental rights मु सब बेले कहिची कि it is a power of people हला लोक मानको किछि पावर और प्रिविलेज दिया होची ता संगे रे गवर्नमेंट रो पावर ऊपर भी किछटा रेस्ट्रिक्शन रहउची मु सब कहितल ना फंडामेंटल राइट्स हमें काहे कि इंक्लूड करले इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हमें गोटे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्रिएट करियो चाहूनु हमें लोक मानको राइट्स को प्रोटेक्ट करियो चाहू सो लोक मानको त किछि प्रिविलेज दोउछु प्लस गवर्नमेंट ऊपर भी किछि रेस्ट्रिक्शन पकोछु सो गवर्नमेंट अगेंस्ट द राइट हमको मिलुची प्लस किछटा फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स मानको अगेंस्ट भी रहउची माने सपोज तमे गवर्नमेंट पाखरे गवर्नमेंट किछ गोटे लॉ बनेला and it is affecting your fundamental rights सेठी भी तमे क्लेम करि परिबो जदि गोटे प्राइवेट इंडिविजुअल किछ एक्टिविटीज बा किछ डिसीजन तमे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करूची सेठी भी तमे क्लेम करि परिबो काना हम कॉन्स्टिट्यूशन ही कहूची बाबा खाली गवर्नमेंट अगेंस्ट हमें दोउनु हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मध्ये दोउछु सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर some are positive and some are negative in character एट मु कोरोना कथा जम्मा भी कोनी तम विद्यारण मु कोनी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर माने कोन देखो मु कोन कहिली फंडामेंटल राइट्स लोक मानको किछि पावर दोउची फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट ऊपर किछि रेस्ट्रिक्शन पकोची सपोज मु कहिली कि यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाबा भद्रकर प्रकाश ताबा फ्रीडम ऑफ रिलीजन अछि माने कोन मु ताको फ्रीडम प्रोवाइड करली कि बाबा यू हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर जहा करिवार अछि करे religious sphere रे ताको मु राइट ता देली सो इट इज पॉजिटिव इन कैरेक्टर सो दिस इज पॉजिटिव इन कैरेक्टर नेगेटिव इन कैरेक्टर माने कोन मु कहिली दैट शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स और वेरियस ग्राउंड्स ऑफ रेस कास्ट जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ एटा गोटे लिमिटेशन पड़िला कि डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही सो गोटे पॉजिटिव वे रे जोटी गोटे प्रिविलेज दिया जाउची आ गोटे नेगेटिव वे रे जोटी किछि लिमिटेशन पका जाउची क्लियर ओके लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट justiciable in nature beauty of fundamental right beauty हला हम कॉन्स्टिट्यूशन में तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट अछि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी हला फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी टिके बाबा अलगा से मामू भाई फंडामेंटल राइट आम भाई कहीं दिस आर जस्टिसेबल इन नेचर जदी फंडामेंटल राइट तमरा वायलेट होउची तमे डायरेक्टली कोर्ट बाको जियो कह बाबा देखो मते फंडामेंटल राइट आपण देइथिले वायलेट हे गला मते जस्टिस दिया जाओ सो सेति पई को गला दीज आर जस्टिसेबल इन नेचर तमे जस्टिस डिमांड करि परिबो इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड सुनुचो ना नाही ओके नेक्स्ट गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट माने कोन कहले जो साउथ इंडियन मूवीज देखिछो
मसीहा था मसीहा गोटे कौन गोटे गंडोल हो पूरा धुआं उद्धार हो आसो सुप्रीम कोर्ट सेमती एंट्रीटा मारे किसी प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट सीधा छिड़ा हो प्रोटेक्ट करने बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स निजे ही गारंटी दउछि तो कौन ही के करिवो हला निजे तमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबो से पॉइंट को आसीबी नेक्स्ट पॉइंट नॉट सैक्रोसैंक्ट हला अगेन एट स्पेलिंग टिके भूल अछि गोटे मिनट हम एडिटर टिके प्रॉब्लम है ओके सैक्रोसैंक्ट हला सैक्रोसैंक्ट नो सैक्रोसैंक्ट माने बुझो कोन परमानेंट दिस आर नॉट परमानेंट इन नेचर एडी तुम गोटे चड़क पड़थियो मुंड ऊपर सर कौन कहउचंदी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड पुणी कहउचंदी परमानेंट नुह कथा सुनो काई चकुल काई सुनो सैक्रोसैंक्ट परमानेंट नुह माने these fundamental rights can be amended by the constitution by the parliament बेला पड़ले टिके किछ चेंजेस मॉडिफिकेशन आनी परिबो फंडामेंटल राइट रे हां एडी देखो हम कोन कहली हम गारंटर के सुप्रीम कोर्ट कोन कहला देखो पार्लियामेंट बाबू तुम जहाँ चेंज कर जहाँ मॉडिफिकेशन कर जदि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर भंग नहला माने फेयर एंड लवली लगे बाडे सुप्रीम कोर्ट बुझ परछो हमर बेसिक स्ट्रक्चर जंदी भांगी बनी तमे अमेंडमेंट करो बट इट शुड नॉट अफेक्ट द कोर आइडियल्स इट शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुझ परछो ना सो एटा सैक्रोसैंक्ट नुह ता माने कोन एटा अपडेट करी हबो टिके मॉडिफाई करी हबो नेक्स्ट पॉइंट सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी हला इमरजेंसी सिचुएशन विषय जानथिबो केतरा प्रकार इमरजेंसी हमर तीनटा प्रकार इमरजेंसी कोन कोन नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंशियल रूल और स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी कमेंट सेक्शन रे कुह स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल अंडर रे लागू हुए फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 नेशनल इमरजेंसी 352 स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल अंडर रे लागू हुए कमेंट सेक्शन रे जणाओ हला सो सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी माने कोन कि जतबे प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करिथिबे सेही टाइम रे हमर फंडामेंटल राइट्स ओडा सस्पेंड हुए सेही टाइम रे हमर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए बट इट इंपोर्टेंट मन रखिबो को दीटा आर्टिकल बा को दीटा राइट हमर सस्पेंड हुए नाही इट इज आर्टिकल 20 एंड 21 20 और 21 को छाडी के आ सब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हे जाय 20 और 21 कोन कहबी आगो कहबी पेशेंस रखो कहबी ओके नेक्स्ट restrictions by the parliament मु कहला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पके हबो आवर फंडामेंटल राइट्स are not absolute they are qualified किछटा restriction पके परिबो पार्लियामेंट को सिचुएशन रे पकाए काहे की पकाए जेंते कि सपोज एग्जांपल दउ छला पैरामिलिटरी फोर्सेस आर्म फोर्सेस तांकर फंडामेंटल राइट्स के रेस्ट्रिक्टेड करा जाय बा गोटे एरिया अछि जोटे मार्शल लॉ चली छि आर्मी वाला बंधु धरी बोलछन तमे सेठी फंडामेंटल राइट्स क्लेम करि परिबोनी कॉलेज जहां नाम नबो से छाड़ो हैला सो किछटा रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट पके परिबो आई होप एते जे क्लियर अछि जदि भी किछि डाउट होउची कमेंट सेक्शन में पचारिबो आई आंसर हला ओके मु तमो कोन कहली फर्स्ट रे कि हम फंडामेंटल राइट्स केते रु केते आर्टिकल भितर देछि आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 32 भितर ताले ई दिटा जंतु कोन करछन एठी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 रो काम कोन एठी 14 रु 32 देछि एमान दि जण की लेट अस सी आर्टिकल 12 बेसिकली कहूची डेफिनेशन ऑफ द स्टेट आई होप क्लियरली विजिबल होतबो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जोटी फंडामेंटल राइट्स स्टेट वर्ड रो मेंशन अछि ना से स्टेट डेफिनेशन कोन सेटा ई आर्टिकल डिफाइन करे स्टेट भीतर कोन जाउची यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट बा एनी अथॉरिटी दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जेंति कि कंफ्यूजन होबनी जे हम स्टेट बोली काहा को कहूची बेले हम स्टेट माने कोन भाबू ओडिसा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ये सब जिनस ना स्टेट माने द एंटायर कंट्री कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट हैला आर्टिकल 13 तले कोन कहूची कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आई होप दिस इज क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज माने कोन आर्टिकल 13 कहूची बाबा पार्लियामेंट बाबा तमे जहां लॉ बनोच बना किंतु आम कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट जीवो नाही कारण आम कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट यदि गला सुप्रीम कोर्ट बोलचंती उडे बाड़े हैला आर्टिकल 13 कहला नो लॉज शैल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ ऑल द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैला कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनोसी लॉ और आइडियल को कोनोसी प्रकार रो पार्लियामेंटरी लॉ वायलेट करू नथिबा ए लॉ भितरे पार्लियामेंटरी लॉ स्टेट रो लॉ प्लस ऑर्डिनेंस मध्ये आसे कमेंट सेक्शन में जणाओ ऑर्डिनेंस को आर्टिकल अंडर रे करा जाय एंड हु कैन फॉर्मुलेट द ऑर्डिनेंस क्वेश्चन कोन ऑर्डिनेंस को आर्टिकल रे करा जाय and who can promulgate the ordinance comment section में जणाओ okay moving on the first part हमर फंडामेंटल राइट्स किछटा पार्ट रे डिवाइड हिच एटा समस्त हम जानि छंती फर्स्ट पार्ट ता कोन राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल अंडर राइट टू इक्वालिटी देछि लेट अस सी
आर्टिकल 14 रु स्टार्ट हेगला राइट टू इक्वालिटी कोन कहूची इक्वालिटी बिफोर द लॉ माने समस्त लॉ आगे समान से शाहरुख खान हो अमिताभ बच्चन होंतु बा प्रियताचार्य हो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ लॉ ऊपर केही भी नहंती समस्त लॉ अंडर रे ठीक अछि जदि क्वेश्चन आसिला कि फ्रॉम व्हिच कंट्री दिस इक्वालिटी बिफोर द लॉ बा रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट करा हैची इट विल बी ब्रिटिश और ब्रिटेन रो कॉन्स्टिट्यूशन हम एटा बोरो करिसंती कि रूल ऑफ लॉ अछि एवरीवन इज अंडर द लॉ एटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस लिखा हैनी मु जानछि त माने किछि जण फिगर आउट करिथिबो कि एटी सर आउ गोटे लाइन थाए जोटे कि हला इक्वालिटी बिफोर द लॉ गोटे हला आउ गोटे हला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब पचारे ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने कोन बहु जण कहंती सर दुनिया रे को भी कोनो को आपण पढांतु लॉ भयंकर ऊपर प्रोटेक्ट करिवो एटा नुह रे बाबा एटा नुह एक्चुअली आंसर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गोटे यूनिक फीचर गोटे यूनिक एलिमेंट देखो आम कंट्री रे हमें कोन जानिछु कि आमे लोकन को डिवाइड करि परिबा नाही आमे सेग्रीगेट करि परिबा नाही ऑन माने कोन कहले डिस्क्रिमिनेटिंग मैनर रे तमे करि परिबनी बट क्लासिफाई आमे करि परिबा सपोज गवर्नमेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को क्लासिफाई करूछ एंड द क्लासिफाई कला चारटा ग्रुप को हला फोर ग्रुप्स हैज बीन क्लासिफाइड एटा कोन डिस्क्रिमिनेशन एटा क्लासिफिकेशन कोन पई करूछु किछि सेट ऑफ प्रिविलेजेस हमको मिलिबा दरकार आंको पई टिके डिफरेंट लॉज थिबो आंको पई टिके डिफरेंट लॉज थिबो आंको पई टिके डिफरेंट लॉज थिबो सो एडी कोआ गला ट्रीटिंग the equals and non-equals कोन treating the equals and non-equals differently is not discrimination देखो तांका भीतर किछि ना किछि डिफरेंसेस अछि सेतमे हम क्लासिफाई करिछु इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहूची कि हम इंटर पॉपुलेशन में हम क्लासिफाई करि परिबा एंड ए कैटेगरीज मानक भीतर लॉस टिके डिफरेंट थिबो डिफरेंट कैटेगरीज भीतर लॉस टिके डिफरेंट थिबो बट जो लोक माने सेम कैटेगरी रे थिबे तांका पई लॉ टा समान कथरा बुझुछ ना नाही आउ थरे कहूचे सुनो बाबा चारटा कैटेगरी अछि ए बी सी एंड डी ए पॉइंट बहुत जण छाडंती आई एम हाइलाइटिंग दिस अगेन एंड अगेन सेते पई चारटा कैटेगरी अछि ए बी सी एंड डी हला चारटा कैटेगरी भितर लॉ टिके डिफरेंट हेई पारे काहे कि हमें क्लासिफाई तो करछु ना सेति पई किछटा प्रिविलेजेस हमको मिलिबा दरकार किछि प्रिविलेजेस तांको कंडीशन हिसाब रे मिलिबा दरकार सो डिफरेंट कंडीशन भितर लॉ टिके डिफरेंट हबो करेक्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहूची कि जो माने सेम सिचुएशन रे अछंदी बाबा ए रे तीनटा लोक अछंदी बी रे दीटा एडी गोटे एडी चारटा लोक अछंदी जो लोक माने सेम सिचुएशन बा सेम कैटेगरी रे अछंदी तांको समस्त को पई लॉ टा समान होबा दरकार बुझि पाल्लो क्लासिफिकेशन करी हबो क्लासिफिकेशन भितर लॉस टिके डिफरेंट हे परिबो बट गोटे पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन भितर लॉस गुडा समान हबो आई होप दिस इज क्लियर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन Article 15 prohibition of discrimination my favorite article हला काहे गलो अदर गोटे मूवी हितला ना आयुष्मान खुराना रा देखिछ ना मूवीटा भी देखि नथियो गोटे मिनिट रो अरे अरे यो पेन बाहन कम है गोटे मिनिट पहले ओके सो कोन कहला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माने हम समस्त जानचंदी भेदभाव कोन से प्रकार हेई परिबनी को ग्राउंड से डिस्क्रिमिनेशन मना करा जाउची ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन बेसिस रे कास्ट जेंडर বা सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हला एई सब बेसिस रे हमें डिस्क्रिमिनेशन करि परिबा नाही नो डिस्क्रिमिनेशन जदि डिस्क्रिमिनेशन हला सुप्रीम कोर्ट कहचंदी हमरा नाम दे देबे हला डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही किंतु मु कोन कहितली किछटा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट पके परिबो पार्लियामेंट पके परिबो जेंति कि हम पार्लियामेंट कहूची रिजर्वेशन अगेंस्ट सब डिबेट चले ना कि आमो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होउची से रिजर्वेशन पाउची मु 80% रखले मु पाउची से 60 40% रखले पाउची एटा तो सर डिस्क्रिमिनेशन देखो सुप्रीम कोर्ट भी कोन कहितले गोटे पिला बाबा भुवनेश्वर रहउची सी एटू स्टार्ट करूची भलो स्कूलिंग भलो न्यूट्रिशनल फूड भलो मार्केट भलो एनवायरनमेंट एटू स्टार्ट कला गोटे बैकवर्ड पिला ए लेवल रु स्टार्ट करूची ए जो गैप टा हे गला बाबा हम आगे 100 मीटर रेस अछि मु एठी स्टार्ट करूची आ गोटे पिलाटे एठू स्टार्ट करूची ता पाकर भलो स्कूलिंग नाही भलो फैसिलिटी नाही भलो एनवायरनमेंट नाही आमो भीतर एत्ते की गैप रे हम रेस दौड़ीबु अनफेयर हैला ना ताको मो लेवल रे आनिया पई ताको गोटे बूस्टर तो दबाको पड़िबो ना ताको गोटे धक्काटे दबाको पड़िबो ना सेही धक्का होची रिजर्वेशन बुझि पारलो सो रिजर्वेशन गिवन टू द बैकवर्ड क्लासेस द बैकवर्ड कम्युनिटीज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन और छोटो कथाटे कहूची जोटा गोटे वीडियो रे देखिथिली समस्त जो माने कहउछन ना हमें डिस्क्रिमिनेशन हबा कथा नो रिजर्वेशन हबा कथा नो रिजर्वेशन काटी दियो कटा हि जीवो बट लेखि की गारंटी रे दियो
कि अपर कास्ट लोक माने तांको कास्ट ऊपर गर्व करिवेनी लेखिकी दियो कि से माने छोट जाति को छोट बोली भाबिबेनी ताले रिजर्वेशन कटा है जीवो लेखिकी दियो देई परिबो so reservation will not be considered as discrimination. I hope this point is clear. Next चला कौन article 16 equality of opportunity. अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, हमको भी थोड़ा मौका दो, ये तो सुनचो ना, हमको भी थोड़ा मौका दो, सबको मौका मिलेगा, ठीक अच्छे. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक अच्छे. समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेबो इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जदि क्वेश्चन आसला हमें को क्षेत्र रे इक्वल अपॉर्चुनिटी कथा कहउचंती, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैला, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो थरे भी यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, समस्त को इक्वल एक्सेस मिलेबो. अगेन एटी किछटा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पड़ी परिबो, जेमते कि रिजर्वेशन हे गला, किछटा सीट रिजर्व थाए बैकवर्ड क्लास लोक मानन पई, वुमेन मानन को पई किछटा सीट रिजर्व थाए, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट. तमे सेठी अगेंस्ट कहि परिबोनी कि ना एटा मो अगेंस्ट जाउची, दिस इज अलाउड, इट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. आउ गोटे हमर थिला रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन, मने पड़छि रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्राइटेरिया ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे. मते कुहो ए जो रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन ता को ईयर रे अबॉलिश हला एंड एबे को स्टेट रे चलछि, कमेंट करो जदि न कर परिबा आई टेल हला. सो आर्टिकल 16 हला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, करेक्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. हम जानछन अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम. कौन कहली पहले फर्स्ट कि आम कॉन्स्टिट्यूशन में जहां सब इंक्लूड करिसेंती, इट हैज बीन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आवर पास्ट. हम जानि छु अनटचेबिलिटी को रेट रे चलतला से टाइम रे. सबटू बड़ एग्जांपल कि ए सब जिंस रे शिकार हेतिले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रो बी आर अंबेडकर. सो सेति हम एटा रखिछु, इट इज अ क्राइम इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज अ क्राइम जदी भी कोडी होछि रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट हला. ओके नेक्स्ट वन होछि आर्टिकल 18 abolition of titles. एटा मोर फेवरेट आर्टिकल, काई कहला एटा बहुत कंफ्यूजन हुए. abolition of titles, जदि से टाइटल abolish करा होछि, हमर टाइटल केमति अछि, आचार्य दास महापात्र खुंटिया जो मन सब अछ, काई के टाइटल अछि, से टाइटल विषय में कहू को टाइटल विषय में कहू छु. वी आर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटरी रिलीजियस नोबिलिटी टाइटल्स. जो टाइटल ओडा तुमको माने कोन कहलो, गोटे सुपीरियर कॉन्टेक्स्ट से देखेबो, गोटे डिस्क्रिमिनेटेड वे रे देखेबो, दैट वी आर अबॉलिशिंग. भाबिलो मु काली जाय कहबी मो जे महाराजा अधिराजा प्रियताचार्य समझ मुंडिया मारा, एटा भूल है ना. यही टाइटल में यूज करि परिबिनी. रिलीजियस टाइटल्स, नोबिलिटी टाइटल्स, हेरिडिटरी टाइटल्स कैन नॉट बी यूज्ड. हमें जो टाइटल यूज करछु ये रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी हला, वी आर नॉट शोइंग ऑफ दैट हमें गुडे लेवल ऊपर है ना. सिंपल टाइटल्स अलाउड नाही. को टाइटल्स सारे अलाउड अछि, एकेडमिक टाइटल्स. एकेडमिक टाइटल्स माने कोन, तो डॉक्टर हे गलो, गोटे पीएचडी स्कॉलर तमे एकेडमिक टाइटल्स. मिलिटरी टाइटल्स हला, मिलिटरी टाइटल्स गोटे ऑफिसर अच्छो, कर्नल अच्छो, से सब जिंस अलाउड अछि. आउ कोन, आउ को टाइटल्स, अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, ए सब जिंस अलाउड अछि. बट एठी भी कोआ गला, एंड एठी गोटे इंपोर्टेंट मन रखिबो, the amo country, amo parliament कहूछि जे no citizen shall accept any titles from the foreign country. title accept करिबो नाही. no special titles shall be given. ए जो nobility titles दिया हबो नाही. आ जदी कोनोसी foreigner amo country रे आसी के काम करूछि and it is trying to get any title from the foreign country, then it has to take the permission of the president. कोन जदी foreign country रे जने आसी के amo country काम करूछि and it is taking titles from a foreign country, then it has to take permission from the president. बुझा पड़िला. okay, abolition of titles, I hope this is clear. okay, moving on to the next one. एथिके थिला पले कोन, right to equality. कोन कोन आर्टिकल अछि, 14 15 16 17 and 18 हला, abolition of titles. अच्छा एडी आ गोटे जिंस खाली कहि दोछि abolition of titles रे. एटा भी कहा जाइछि जे इफ यू आर यूजिंग योर टाइटल, जेमि कि एकेडमिक टाइटल्स अला टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पीपल और टू शो योरसेल्फ एज अ सुपीरियर पर्सन, और you are using it in a illegal way, then that particular award or that particular title shall be taken from you. एटा भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अछि. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट टू फ्रीडम. अदरे बहुत राइट अछि, भयंकर राइट ओडा थ्वाइछ राइट टू फ्रीडम अंडर रे. राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल रे स्टार्ट होची, आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 रे केवल 6 टा राइट अछि हम पाखरे. जानि पड़छो केते प्रकार राइट अछि, हमर लोक मानक बारे अवेयरनेस ही नै, ताका बारे एतिके राइट अछि. आज कहूची सुनो, राइट जति अछि हला, 6 टा राइट हम पाखरे अवेलेबल अछि. कोन कोन राइट अवेलेबल अछि, गोटे मिनट. हां, सो 6 राइट्स आर गिवन टू अस. गोटे हला फ्रीडम ऑफ स्पीच and expression. freedom of speech and expression, एटा होचे 1 अंडर फ्रीडम अंडर. फ्रीडम आर्टिकल 19 अंडर 6 टा राइट जाउचे. गोटेला स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
सेकंड होची फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और असेंबली असेंबली मु करछि गोटे मिनिट ओके स्पीच लिबी हला रे अता लिबी हला हां स्पीच एंड एक्सप्रेशन तापरेला असेंबली फ्रीडम ऑफ असेंबली तम पाखरे अछि हला थर्ड हला फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तम मानक पाखरे अछि फोर्थ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अछि हला एंड फिफ्थ आउट कोन स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन रेसिडेंस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ गोटे सिक्स्थ प्रोफेशन हला ए छटा राइट हमको प्रोवाइड करा जाउची कोन कोन स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन रेसिडेंस मूवमेंट एंड प्रोफेशन कोन एडा कहि दोची स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोडा तमरो निजर ओपिनियन हेई परिबो हला यू कैन स्पीक यू कैन शेयर योर व्यूज हम पाखरे फ्रीडम ऑफ प्रेस अछि मने छै नै हम प्रेस ऊपर रेस्ट्रिक्शन पके दैथिले ब्रिटिशर्स माने सेठी तो आसेला कि वी शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच ओपनली डिबेट करिया पे डिस्कशन करिया पे अगेन एट कोन कहली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देई देली काली के किछि भी जाई के गपिबो माने पान दुकान भी बाडेयो बुझि परछो नै यू कैन नॉट स्पीक समथिंग दैट गोस अगेंस्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी पर एमिति किछि कथा कहि देला जेटा राइट क्रिएट कर देला तमे ठीक कहि दे कि पळेला पछोडे निया जोळुछि यू कैन नॉट डू दैट ओके सेठी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आसी गला ताबरेला असेंबली करि परिबो माने कोन कहले असेंबली माने यू कैन गैदर तमे गैदर हे कि किछि प्रोटेस्ट करूछो बा पीसफुली एमति नै जे पॉकेट छुरी धरि गैदरिंग करछो सेपटो भी बुलेट आसीबो रबर बुलेट पाइप पे आसीबो बाजी बुझ परछो यू कैन नॉट गैदर विथ आर्म्स एंड एम्युनिशन पीसफुली करो भल से कथा वार्ता हो पीसफुली डिस्कस करो अगेन ए रेस्ट्रिक्शन तो गोटे कहली आर्म्स एंड एम्युनिशन नै कि जाई परिबोनी सेकंड जिंस वाला पब्लिक प्रॉपर्टी रे करूथबो एने जे का घर भीतर असेंबली करिवो मु कहबो मोर फ्रीडम ऑफ राइट अछि मु तो बारंडर आज बसिबी ना सेंदे हे परिबो पब्लिक प्लेसेस जोटे अलाउड अछि सेडी करि परिबो हला नेक्स्ट हला एसोसिएशन समय फॉर्म करि परिबा बहुत प्रकार एसोसिएशंस अछि तमे गोटे करो पुरुष निर्यातना ऊपर करो महिला निर्यातना ऊपर करो यू कैन डू वैलेंटाइन्स डे आसुची किछि भी करि पारो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एसोसिएशंस बुझि परछो नेक्स्ट हला रेसिडेंस तमे कंट्री रो कोनोसी भी पार्ट रे जाई कि रही पारिबो यू कैन एक्वायर प्रॉपर्टी यू कैन लिव बट सेठी किछि प्रकार रेस्ट्रिक्शन नथिबा दरकार स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज थाई सेठी किछि रेस्ट्रिक्शंस थाई नेक्स्ट हला रेसिडेंस माने कोन तमे कंट्री रो कोनोसी भी पार्ट रे जाई कि रही पारिबो प्रॉपर्टी एक्वायर करि पारिबो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस बट से जदी किछि लिमिटेशंस अछि जंती कि ट्राइबल एरिया हे गला ट्राइबल प्रॉपर्टी हे गला बा कोडी गोटे जगह रे मिलिटरी रूल अछि मिलिटरी लॉ अछि सेठी टिके रेसिडेंस डिफिकल्ट हे जाय सो सेटा गोटे जिंस मुंडे रखा हबो नेक्स्ट हला मूवमेंट तमे गोटे जगह आ गोटे जगह आराम से मूव करि परिबो यू हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट किंतु बाबा एठे भी रेस्ट्रिक्शन अछि भाबो बरमुंडा रे टेररिस्ट पस जायछन हला बरमुंडा छकरे बंधु धरि बुलछन तमे कहबो नाइ मु एई टाइम रे गुपचुप खायो छी आई हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कन्न मुलिया खायो गुपचुप तो छाड़ दियो कन्न मुलिया खायो कारण सेई टाइम रे मिलिटरी रूल चलछि टेररिस्ट पर्सन हमको जो मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अछि कोरोना टाइम रे कोन हम फंडामेंटल राइट एक्सेस करि परथले ना बाहर को बोले जो माड पीवीसी पाइप रे पडुतला वी कैन नॉट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से टाइम रे रेस्ट्रिक्टेड करा जाए आ किछरा एरिया सपोज प्रोस्टिट्यूशंस कर मूवमेंट किछरा एरियाज रेस्ट्रिक्टेड थाई एटा गोटे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नेक्स्ट हला प्रोफेशन मोर गोटे स्टूडेंट एटा को बहुत सीरियसली नै गला काना अधा कथा सुनि के आपन भले YouTube अधर काटी देला जो माने YouTube अधर बे क्लास टा काटिबे एटी नाम नेबे मु एटी कोन कहूची फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन सेति की सुनि के पळेला कहला हां मते तो सर कहि देला अधा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन YouTube वीडियो काटला ताकि ड्रग बिकला धरा पड़ला तेल पचराला काहे करछु सर आपण बा कहले फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन अरे इलीगल एक्टिविटीज जबते फ्रॉड कामरे पसियो माने नाम नबो इट शुड बी लीगल प्रोफेशन एमिति कर लीगल थिबा दरकार हला ए फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को बेसी सीरियसली नबनी मन इच्छा काम करथो तापरे ओके एटा छोटा राइट बुझा पड़ला नेक्स्ट आर्टिकल 20 कन्विक्शन इन ऑफेंस हला एटा कहि दोछ ठीक है एटा बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल टा कन्विक्शन इन ऑफेंस माने कोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे इन केस ऑफ कन्विक्शन इन ऑफेंस एटा बेसिकली पुलिस मैटर हले केस फेस हले फंडामेंटल राइट को डाकिबो हला कन्विक्शन इन ऑफेंस से किछटा हमको राइट प्रोवाइड करछि गोटे मिनिट ओके कन्विक्शन इन ऑफेंस कोन राइट प्रोवाइड करा होछि गोटे हला नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आ माने कोन नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ माने बाबा आजी 2020 2024 हला मु गोटे क्राइम करथि 2017 रे 17 करनथि एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन हला 17 रे करथि मु तापर गोटे पनिशमेंट पाइथि ताबै बाबा से टाइम रे पनिशमेंट थिला 4 वर्ष जेल ठीक अछि
ହେଇଗଲା ପନିशमेंट ହେଇଗଲା ଏବେ 2024 रे गोटे लॉ बना हला कि सेही पर्टिकुलर क्राइम जे करदियो ता गोड़ गोटे काटी दियो एमते गोटे लॉ बना हिची अरे सेटा एबे टू स्टार्ट हबो ना 2024 25 26 जो माने क्राइम करे ना मु गोटे बणी काटी दबो रेट्रोग्रेसिव लॉ हबो नाही जेबे इंप्लीमेंट हला ता पर वर्ष रे इंप्लीमेंट हबो मते घोसाडी जदि मो गोड़ काटी दो दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ एडा हेई परिबो नाही सेकंड हला नो डबल जियोपार्डी आ माने कोन नो डबल जियोपार्डी आ माने होची सेम क्राइम पाई गोटे क्राइम कली मु सेही पर्टिकुलर क्राइम पाई मते दी थर पनिशमेंट देई परिबन थरे नाम नहीं गली थरे भितर को हेई गली पनिश हेई गली तापर मते डाकनी मते भूल जाओ प्लीज मु गोड़ तल पड़ची मु ठीक हेई गली भलो हेई गली मते डाक नाही बाबा गोटे क्राइम करची अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्राइम करची 2017 रे पनिशमेंट मिलला 4 वर्ष और सब बेले पुलिस जोडी देखियो सेठी सिखिबो यू कैन नॉट डू दैट थरे क्राइम पे नेली ना आउ थरे करे तापर मते कहिबो नो डबल जियोपार्डी सेम ऑफेंस पाई डबल थर बा रिपीटेड थर ऑफ माने पनिशमेंट देई हबो नाही सेम क्राइम पे थरे ही पनिशमेंट मिलिबो हां एटा नो जे सेम क्राइम को आउ थरे कले मिलिबोनी आउ थरे कले मिलिबो थरे जो करि देइची ता पे थरे ही मिलिबो हला ओके एटा जो मो शॉर्ट बाजी एक्चुअली ये ही जाउछ गोटे मिनट नो डबल जियोपार्डी सेकंड पॉइंट हला थर्ड पॉइंट हला नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन आ माने कोन नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन आ माने होची मु मो निज अगेंस्ट रे एविडेंस दबा पई बाध्य नुह तमे मते बाध्य करि परिबनी से फिल्म से देखिछ ना नहीं पुलिस आगे हम जहां वक्तव्य दउ हम जहां क्राइम एक्सेप्ट करू कोर्ट रे सेटा एडमिसिबल नुह एज एन एविडेंस एडमिसिबल केबे भी नुह नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन मो निज अगेंस्ट एविडेंस दबा पई बाध्य नुह सो देखो पले जदी कोने धरा पइलो पुलिस हाथ रे मानि जाउ ता आगे कोर्ट रे मना कर दो ना कोर्ट रे इट इज नॉट एन एडमिसिबल ऑफेंस बुझि परछ ना नहीं सेति पई काहे करा जाय छेटा गोटे प्रोटेक्शन माई सपोज कोर्ट एक्सेप्ट कला सेल्फ एविडेंस ताले मु दबा किछ पड़िबनी से पुलिस बाड़ी धर नथिबो से ऑटोमेटिकली मो अगेंस्ट एविडेंस हो मु तो निजे कॉपी भी डरी कियो और सेटा यूज हे जिवो मो अगेंस्ट दैट इज नॉट करेक्ट सेट बाय नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन लास्टली ओके व्हाट मीन कोन कहले चारटा हे गेला ना हां नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ नो डबल जियोपार्डी नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन तीनटा सॉरी कोन रेडी no self incrimination hala I hope this is clear this provides protection against conviction in offense clear okay next one right to life आर्टिकल 21 अंडर रे राइट टू लाइफ अंडर रे बहुत सारा राइट्स अछि हला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस मेनली बढ़ुची राइट टू लाइफ पई तमर पर्सनल लाइफ पर्सनल स्पेस लिबर्टी जदी अफेक्ट होची तमे राइट टू लाइफ अंडर रे क्लेम करि परिबा हला लाइक आई हैव द राइट टू न्यूट्रिशियस फूड आई हैव द राइट टू गुड सैनिटेड माने सैनिटेशन वाला लिविंग रे बंचिया पई मोर राइट अछि क्लीन एयर ए सब जिंस राइट टू लाइफ अंडर रे जाउची राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी तार गोटे पार्ट एटी आ गोटे आर्टिकल अछि तापरे आर्टिकल 21A व्हिच इज कॉल्ड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years आर्टिकल 21A को अमेंडमेंट अंडर एटा इंसर्ट करा जायतला 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 एजुकेशन पई गवर्नमेंट बहुत सारा काम करूची से मिड डे मील हो कि अंडा छतुआ हो पॉइंट होची पिलांको स्कूल को आनिबार अछि आर्टिकल 21A से जिंसटा गारंटी दिए सो इट्स अ फंडामेंटल राइट प्ले इट्स अ फंडामेंटल राइट नेक्स्ट हला प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस डिटेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस डिटेंशन हला पुलिस डिटेंशन माने कोन डिटेंशन पिले देखो दी प्रकार थाए हला दी प्रकार थाए मो नेक्स्ट स्क्रीन को मूव कर जाए ये स्पेस मिलियो लिखिबा को गोटे मिनट ओके पुलिस डिटेंशन ने कोन कहा जाउची पुलिस डिटेंशन हला बुझा प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस डिटेंशन रे कोन एटा हला आर्टिकल 22 दीटा प्रकार पे डिटेंशन थाए गोटे हला प्यूनिटिव डिटेंशन आ गोटे हला प्रिवेंटिव डिटेंशन प्यूनिटिव डिटेंशन माने कोन क्राइम हल्ला परे जो डिटेंशन ता हुए ताको मैं प्यूनिटिव डिटेंशन बोली को तमे जदि गोटे पर्टिकुलर क्राइम करे जे तुम पुलिस टेकी नहीं पड़ेला तुमको 24 घंटा भीतर ताको कोर्ट रे हाजिर करियो पड़िबो यू हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट एंड सेटा तुमर राइट तुम जदि कि टेकी होने तको मत कोर्ट नहीं चलबा मत कोर्ट ने तू बुझि पड़छो सो दिस इज प्यूनिटिव डिटेंशन किंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन रे प्रोटेक्शन ता नाही
प्रिवेंटिव डिटेंशन माने कोन क्राइम हबा पूर्वरु कहल ना तो सपोज तुम तो केउटे काली मीडिया रे हलचल कर देला मु प्राइम मिनिस्टर गाड़ी तले बम लगे देबी सपोज लगे न लगे देलो जदी टेकी कि नहीं पळेबो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अंडर रे टेकी नहीं थोई देबो नो वारंट नो एविडेंस नो क्वेश्चन आंसर्स नो प्रेजेंटिंग बिफोर द कोर्ट बहे कुटिबे हला सो प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे हमको प्रोटेक्शन मिले नहीं बट प्यूनिटिव डिटेंशन अंडर रे प्रोटेक्शन अछि कि वी हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स हला सो दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोन सडा थला पुलिस डिटेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस डिटेंशन हला जो हम तुमको कहउथिल ना इमरजेंसी टाइम रे दीटा आर्टिकल सस्पेंड हो नाही गोटला आर्टिकल 20 दैट इज कन्विक्शन इन ऑफेंस आ गोटला आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ आई होप दिस इज क्लियर ओके नेक्स्ट हला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर रे दीटा आर्टिकल आछी गोटला आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर बेगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हला ए तीनटा कोन फोर्स्ड लेबर माने जानिछो कि we are forcing someone to work for us sometimes without payment or sometimes due to some agreement beggar mane semti same jinso bonded labor ba we ask them to pay us kichhi baba oda loan neitla se pay kari pauni so we are forcing him to work for us for free beggar by human trafficking jo smuggling hondi pila mane choto choto chua mane jio mane puo mane smuggling kara jay human trafficking against kemti action nei hoba sera sabo article 23 अंडर देउची जो बेगारटा भिकारी बोली पढिबनी दिस इज अ डिफरेंट थिंग हला जो देवदासीस थांती बॉन्डेड लेबर्स थांती ए सब अगेंस्ट हमरा ए पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे नेक्स्ट हला आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन पाई ए आर्टिकल ता करा हैची कोनोसी भी hazardous जॉब कोनोसी भी कंपनी को भी जगह रे 14 इयर्स तळकू पिला माने काम करि परिबे नाही फोर्स चाइल्ड लेबर किंतु एटा मते फील हुए ए गोटी फंडामेंटल राइट बहुत वायलेट होचे हम कंट्री रे कना आखो पाको जोडी देखि ओटे छुआटे काम ही करूथुबो मु एमिति भी किछटा विरिष्ठ लोक मन को देखिची जो माने बसि थांती पान दुकान रे कतो छुआ मन को केबे काम करिया कथा न से एट द सेम टाइम को छोटो दिका चानी गई दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री बुझि परछो सब जगह रे छुआ काम करूछंती स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन सो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हला एबे को एक्ट अच्छी चाइल्ड लेबर रिलेटेड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर कमेंट सेक्शन रे जणाइबो हला ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखो मु कोन आमे कोन जानचंती हम प्रीएम्बल रे एटा भी लिखा जायछि कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री सेक्युलरिज्म वर्ड को कंट्री वासिछि इट इज अ वेस्टर्न कांसेप्ट ओके इट्स अ वेस्टर्न कांसेप्ट बट आम सेक्युलरिज्म आ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म भीतर टिके डिफरेंस अछि आम सेक्युलरिज्म को कहूछि वी विल मेंटेन अ सेफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम यू ओटा दूर रही किंतु तमे जदि किछि काम को एमिति कलो जोटा लोक मानक फंडामेंटल राइट्स को हेल्थ को तांका पोजीशन को अफेक्ट करूछि आमे एंट्रीटा मारिबु कहली पर आमे होछु साउथ इंडियन फिल्म रो हीरो एमिति टाइम रे एंट्री मारू सेटा हुइसल ताली बाजिया कथा बाजियो हला सो हमरा सेक्युलरिज्म अछि बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर रे सेक्युलरिज्म प्रमोट करा जाय को आर्टिकल अंडर अछि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 हला देखिबा आर्टिकल 25 और 28 अंडर रे कोन देछि त आर्टिकल 25 रो 28 भीतर फ्रीडम ऑफ रिलीजन अछि यदि आर्टिकल 25 विषय कहबी व्हाट इट डज इट से फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मोर इनर वैल्यूज मोर इनर बिलीफ मु कहा सहित रिलेट करिवि को भगवान को मानिबी मु चेयर को मानिबी कि पत्थर को मानिबी कि जगन्नाथ को मानिबी तडा भाई मो ऊपर आई हैव द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस फर्स्ट जिंस आई हैव free profession I have the freedom to profess I can profess my religion I can declare my religious belief mu directly koi paribi mu hindu ba muslim a christian ki sikh I can tell anything I want freedom to profess next la freedom to practice rituals थाए ना सेरेमनीज थाए ना मु ओपनली कंडक्ट करि परिबी से जदि कि आसी पसलो होमो कुंडरे पुरई बाडी बुझ पाछ नो वन कैन इंटरफियर I have the freedom हां जदि से रिचुअल मु बळी पकोउची हला दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ना आई एम किलिंग एनिमल्स आई एम किलिंग ह्यूमन बीइंग्स कि जो तंत्र विद्या सेडी बसी करूची दैट इज रॉन्ग आई कैन नॉट डू दैट हला बट ता छडा भलो रिचुअल्स भलो प्रैक्टिसेस आराम से कंडक्ट करि हबो फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन प्रोपागेशन माने कोन कहला प्रमोटिंग माय पर्टिकुलर रिलीजन मु मो रिलीजन विषय आराम से एडवर्टाइज करि परिबी मु कहि परिबी मो रिलीजन एटा भलो जिंस अछि मो जगन्नाथଙ୍କ विषय कहि परिबी मो महादेव को विषय कहि परिबी मो समस्त विषय कहि परिबी काहा को तंटिया मारे के फोर्स कर परिबी क्या पूजा करे नो मो हाथ जोड़ी की मो रिलीजन विषय प्रमोट करि परिबी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करि परिबी बट काहा को फोर्स करि परिबी नि कन्वर्ट हबा करेक्ट ना ओके
Next ala freedom to manage religious affairs article 26 under the I can easily manage my religious affairs administer kari paribi mate kon ko type activity karibar achi ko type institutions own karibar achi I can do that. Freedom from payment of taxes for promotion of any religion article 27 under diya jaichi. We are not bound to pay any kind of fees or taxes for management or maintenance of a particular religion. Jodi religion na re amatu tax collect kara jauchi it's not secularism. Amo ichha re donation kale that is a different thing. Ayodhya mandir hala ame samaste donate kale ram ji ko pai very good. Kintu the government chedi bhable tax pakai thanta religion tax pakai thanta for maintenance or promotion of a particular religion that is wrong. We are not forced to pay taxes hala. Lastly, Article 28 under the freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institution. Acha, jo educational institution ko institution bisare kohchanti we are talking about the educational institution which are maintained by the government or government funds wholly or partially maintained by the government hala sei prakar educational institution re mate kehi force kari paribani religious instruction ko attend kare religious instruction mane buझुचो mane bhaba kodi gote prayer hochi prarthana hochi ba kichi prakar speech diya jau deliberation diya jauchi I'm not forced to attend that tame just because I am the student of your college or school you cannot force me but given that a right ta sette bele kaam karibo jette bele institution na government owned institution hithibo correct so these are freedom of religion and these are some of the theories correct I hope this is clear more reasonable restrictions bi kichita कहली freedom of religion re okay let us move on to the next one cultural and educational rights hela eti ame cultural and educational rights ko manango bisare kohuchu we are talking about the cultural and educational rights of the minorities dekha bile eti minorities re question ase bele bele which kind of minorities are recognized by the country dita prakar minority ko ame recognize karu gote hela religional minority a gote hela linguistic minority ei dita minority ko ame recognize kor goटा religional minority और हला linguistic minorities okay कोन कहूची देखिबा article टा article 29 और 30 under रे देछि cultural and educational rights कोन कहूची protection of languages script कोन कहूचेटा protection of language script and culture of minority जो minority group माने अछंदे तांकर रे distinct language थाए culture थाए traditions थाए script थाए लेखा थाए किछते तांकर books थाए historical facts थाए ताको preserve करिया पे तांको पाकर right अछि they can claim rights for the language ताको केही भी मना करि परिबेनी बुझि पड़छो they are part of this country they are in minorities and they can preserve हला next हला right of minorities to establish and administer educational institution minorities माने educational institution establish करि परिबे तांकर जहा rules and procedures सेवन तांको हिसाब रे बनै परिबे सेठी कोनोसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही गवर्नमेंट द्वारा एटलीस्ट कि फंड्स दिया जाउनी जते कि फंड्स अलगा स्कूल्स मानकु दिया जाउची तांको दिया जाउ नाही these things cannot be done बुझि पड़छो एटा होची minorities मानक पई आ एडी इंपोर्टेंस बडला दीटा प्रकार minority religious minority आ उडला कोन linguistic minority हला okay finally the most important article किंतु ता पूर्वरु article 32 आसी गलानी किंतु ता पूर्वरु गोटे जिंस मन रखो article 13(1) हमर फंडामेंटल राइट रो बाहर करा जाइछ हला article 31 does not belong to the fundamental right anymore एटा थिला right to property हला right to property ओके राइट टू प्रॉपर्टी को हमें बाहर कर देछु फंडामेंटल राइट रो अच्छा कमेंट सेक्शन में जणैबे निश्चित भाव रे जणैबे तम राणा पकेली जणैबो कि को केस रे को ईयर रे बा को अमेंडमेंट द्वारा एई पर्टिकुलर राइट को फंडामेंटल राइट्स रो रिमूव करा जाय छला जो जो माने कमेंट दबा चॉकलेट मिलियो सॉफ्टवेयर मिलियो हला राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव करा है जाय छी और लीगल राइट करा है जाय छी लीगल राइट करा है जाय छी इन द स्टैट्यूटरी बुक हला ओके आर्टिकल 32 माने कोन कहला आर्टिकल्स मानकर सुपरस्टार होचंदी आर्टिकल 32 ये नथले किछि हबन विश्वास करियो नथले किछि हबन हला आर्टिकल 32 माने आमो कॉन्स्टिट्यूशन रो कर्ता धर्ता सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जे आर्टिकल 32 को कना जत्ति की सब तुमको आर्टिकल कहली 14 रु 30 जाए से माने सब यूजलेस है जिवे इफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज नॉट प्रेजेंट ए आर्टिकल को कोन कहा जाए राइट टू constitutional remedy right to constitutional remedy माने तमर जदी फंडामेंटल राइट्स जति सब राइट्स कहली आर्टिकल अंडर जदी वायलेट होची सीधा गोटी नाक सीधा सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबो
जाके क्लेम करि परिबो बुझि परछो माने किते स्ट्रांग हे गला भाबो एक तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन रे जस्टिसेबल कहि देले ठीक अछि ताकू प्रोटेक्ट करिया पई माने से माने काले भांगी जिबे तांके भांगी दबो वायलेट कर दबो ताकू प्रोटेक्ट करिया पई ना हम पाइ फंडामेंटल राइट अछि व्हिच इज आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 अंडर रे तमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबो यूजुअली लीगल केसेस पई नॉर्मल केसेस पई हम सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परंतनी हमें तोड़ू लोअर कोर्ट रे अपील करि जानती बट अंडर आर्टिकल 32 जदी फंडामेंटल राइट वायलेट होची हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबा अच्छा एटी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे कोन हमें खाली सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबा नो हाई कोर्ट पाखु भी जाई परिबा बट सेटा आर्टिकल 226 अंडर रे आर्टिकल 226 अंडर हाई कोर्ट पाखु जाई परिबो हाई कोर्ट पाखु आर्टिकल 32 अंडर सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबो हला एटी आ गोटे बढ़ा जिंस तुम कहूची देखो सुप्रीम कोर्ट पाखु थरो गलो माने तमरा फंडामेंटल राइट वायलेट हला एंड यू वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करिवो सुप्रीम कोर्ट पाखरे आर्टिकल 32 अंडर किछटा डिवाइसेस अछि जोटो को हम रीट्स बोली कहू वी कॉल देम एज रीट्स WRITS रीड्स विषय के बेउडा आउट क्लास रे जदी हला आई विल टेल यू एबे खाली सुनि थाओ किछटा रीड्स अछि जेमति कि habeas corpus mandamus prohibition certiorari and out हला quo warranto हला ए जो तुमको स्पेनिश नावडा सब नहीं कोरियन नावडा सब ना बट दिस आर नॉट कोरियन हमरो सो डिफरेंट जगह रे अछि हेबियस कॉर्पस जेम गोटे इटालियन मीनिंग आर अछि कमांड वी माने सॉरी हेबियस कॉर्पस माने टू हैव द बॉडी ऑफ हला आर सब मानी अछि गोटे मूवी आसला जय भीम बोली त माने देखि छ सूर्य रे आई गेस मूवीटा सेतरे हेबियस कॉर्पस जिंस को हाईलाइट करा जायछि ठीक देखिबो ओके सो आर्टिकल 32 अंडर सुप्रीम कोर्ट एई सब डिवाइसेस को यूज करि परिबो टू एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट्स के बोर्ड नेक्स्ट क्लास रे आई विल टेल यू कि रीड्स ओडा कोन ठीक अछि ओके एते कि थिला बाबा हमरा फंडामेंटल राइट्स आई होप फंडामेंटल राइट्स विषय आ किछि भी डाउट हबो नाही तार बेसिक फीचर्स कोन पई दरकार कहि कि हम अडॉप्ट करले आ तार सब आर्टिकल विषय मु गोटे ओवरऑल सिनॉप्सिस प्रोवाइड करिछि हला आर्ट भी बहुत जिंस हेई परिबो बट सेति पे हम सति कनेक्ट होतो ओके ठीक है मूव करिवे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पाखको देखो आ ऊपर ना फंडामेंटल राइट ऊपर बहुत सारा एमसीक्यूज अछि एंड जति के एमसीक्यू हम पाखरे अछि मु बिलीव करे जे जणे डिलीजेंटली एमसीक्यूज उडा करिवो एमिति गुट्टे भी क्वेश्चन है ओडिसा गवर्नमेंट एग्जाम रे जोडा अटेंड हेई परिबो नाही मु तो आज सब क्वेश्चन करोनी लिमिटेड टाइम अछि सो आई एम डूइंग 10 क्वेश्चंस ओनली किंतु एटा गारंटी दोछि हमर एटी जति के क्वेश्चन बना होछि बा मु बनौछि त जति गुट्टे भी क्वेश्चन एमिति एग्जाम रे नथिबो जोडा आपन को आसीबनी हला आई गारंटी दैट ओके important MCQ the concept of equality before law has been taken from or is derived from kon habo it has been taken from British origin eta habo British origin ar answer equality before the law jota ko ame rule of law madhya ko second question what does the concept of equal protection of law aims to achieve article 14 under कहली ना equal protection of law कोन अचीव करे ट्राई करछि arbitrary treatment under the law एटा नुह केबे भी नुह similar application of laws to all हेई पारे discrimination based on social status favoritism towards certain groups एई सब जिंस हबो नाही similar application of laws to all will be the answer according to the supreme court when does article 14 not apply को केस रे article 14 apply होए नाही when equals and unequals are treated differently okay most likely ita hi habo when everyone is treated equally not correct when laws are not applied uniformly not correct when discrimination exists ita hi habo answer to kon kahithili gotte minute pele just a second answer habo when equals and unequals are treated differently हला ए टाइम रे तमे क्लेम करि परिबनी आर्टिकल 14 सेठी लागू हबा नाही कहला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पड़े ठीक अछि नेक्स्ट what is the significance of word only in article 15 it limits the grounds for discrimination it expands the ground for discrimination emphasizes the severity of discrimination it excludes certain categories from discrimination it excludes certain categories from discrimination kahi ki na ama article ko कहउची only on the grounds of religion caste place of birth gender au jaha reasonable restrictions hoila sera podi paribo hala so seti discrimination boli consider kara habani kichira category kara habo and hence it excludes certain categories from discrimination next which provision of article 16 permits reservation of appointments for backward classes eta answer aba fourth provision 16 article 16 ro clause 4 gote minute likhi douchi you can take note article 16 ro
article 16 ro clause 4 এবং 4A talks about this particular thing. So our answer haba fourth provision. Our answer haba fourth provision. Hela, who is prohibited from accepting any title from any foreign state according to article 18. Article 18 hisab re who is prohibited from accepting any titles? Answer haba citizen of India. But citizen ko prohibition achi, it cannot accept any title from the foreign country. Okay, podeli just. Which provision allows reasonable classification of persons, objects and transactions by the law? Eta ko kon haba bhabila এটা হবা আর্টিকেল 14 जो কইল না রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন থিব এমিতি ক্লাসিফিকেশন করিবানি যে ডিসক্রিমিনেশন হউতব বাট গোটে রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন হবা সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 14 ওকে নেক্সট হলা 18 আর্টিকেল 18 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রহিবিটস দ্য স্টেট ফ্রম কনফারিং কোন একাডেমিক ডিস্টিংশন মানে কোন বুঝি পড়ছ র Okay, kon kouchi article 18 of the Indian constitution prohibits the state from conferring mane kono state को ये रे prohibit करूची कौन provide करिया पे prohibit करूची academic distinction ना religious titles ना military titles ना all of the above. Answer about religious titles. Academic distinction तो allowed अछि, academic distinction हमें provide करी परिबा. This is correct. Religious titles allowed nahi, hereditary religious nobility titles allowed nahi, so that will be the answer. What is the significance of the fundamental rights in the Indian constitution? Very good. They are legally enforceable rights. They are just aspirational goals. They can be amended by the parliament. They are non-binding principles. Significance which they are legally enforceable rights. है ये rights are legally enforceable. को article under है हमें legal को माने justice मागी परिवा article 32 and article 226. I hope this is clear. This will be the answer. Next. What is the remedy available for violation of fundamental rights? एबे जस्ट कहिली कोन रिट jurisdiction of the supreme court एयोडा हबनी civil lawsuit criminal prosecution referendum नुह referendum गोटे voting criteria रिट jurisdiction of the supreme court and high court द्वारा हमें violation को protect करि परिबा remedy provide करि परिबा. So that is all for today students. I hope तमन को class भलो लागि थिबो. This is my first YouTube class. I hope तमन ठीक लागि थिबो. Comment section में जणेबो आ को टॉपिक ऊपर तमु दरकार अछि and आउरी डिटेल रे पढिबा पई आउरी MCQs गैदर करिया पई विद्यासागर क्लासेस सहित कनेक्ट करंतु. Till then, bye bye, keep your life as simple as that.